Welcome all of you to MAHAVEER JAIN National School online tutorials. Here in this forum, we are going to teach. I am going to discuss topic number system with you all of you. So let's begin. First, our topic is number system. Number system is the basically a major and very important topic as perspective to the future oriented classes. For example, नंबर सिस्टम इफ़ वी डोंट नो, अगर नंबर सिस्टम हमें नहीं पता है तो हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है और इसे आगे जाके कोई बताता भी नहीं है. नंबर सिस्टम हमें बहुत ज़रूरी है इस क्लास में समझना और बारीकी से समझना, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज एज क्लासेस बढ़ती जाती है पर बहुत सौ को यही नहीं पता होता है कि नंबर सिस्टम है क्या. So let's begin. First we will talk about the flow chart of number system. Let's start. Real numbers. These real numbers are basically made of two numbers. First is a rational number and second is irrational numbers. Again, this rational numbers is basically classified into two categories. First is basically fraction and second is integers. Now this integers is again classified into two basic. First is negative integers and second is whole number. And this whole number is again classified into two. First is 0 and second is natural number. Now I want to describe this chart. What is the chart about? First chart is basically saying real numbers. Real numbers basically obtained from rational numbers and irrational numbers. Irrational number is not being categorized into another two categories as rational number is being done. Rational number is being categorized as fraction and integers. And then afterwards integers is being classified into negative integers and whole numbers. And then whole numbers is categorized into 0 and natural numbers. बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा कि रियल नंबर दो नंबर से मिलके बनता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से, और रैशनल नंबर दो नंबर से मिलके बनता है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स. फिर इंटीजर्स दो नंबर से मिलके बनता है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर, और होल नंबर लास्ट में दो नंबर से मिलके बनता है, एक तो 0 और नेचुरल नंबर. 0 सभी को पता है, डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट. एक्चुअली दिस इज द चार्ट, फ्लो चार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स. Now we will talk about these numbers in a brief. Let's start first from natural numbers. First start from natural numbers. So I will talk about natural numbers. Natural numbers क्या होता है? Natural numbers क्या है और इसे कैसे डिफाइन करेंगे? आप नॉर्मल जो काउंटिंग करते हैं from 0 to, but we will start counting from 1. We are not including 0. We will count only from 1. So first, what is natural numbers? What is natural number? Natural number is basically we are counting from 1. So we can say from 1 to infinity, because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 it goes to infinity. Infinity means it till last. We don't have any number, we are not stopping anywhere, so that is infinity. So we can say that natural number is from 1, 2, 3 dot infinity, and it is denoted by capital N. These are natural numbers. In small language we can say that the counting numbers from 1 to infinity is known as natural numbers. Now whole numbers.
whole numbers. What is whole number? Whole number is basically nothing other than natural number, but including zero. इसमें केवल जीरो इंक्लूड होता है, बाकी एज इट इज इट इंक्लूड्स जीरो अदर देन नेचुरल नंबर. So we can say that basically this is the including zero. So you know all this कि अगर अपन आगे जीरो लगा दें then 1 2 3 4 up to infinity, these are the whole numbers. Only we have to place zero before counting numbers, so that is a whole number. जिसे हम कह सकते हैं पूरा नंबर. हिंदी में अपन बात कर सकते हैं पूरा नंबर. होल नंबर मतलब प्योर एंड होल फुल नंबर, वी कैन से दैट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर होल नंबर, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीजर्स. व्हाट इज इंटीजर्स? So let's talk about integers. Integers basically defined as those numbers which start from minus infinity to plus infinity. As you all know, minus infinity to plus infinity, integers. It can be positive, it can be negative. We can say that here, it can be positive, it can be negative. So integers basically from minus infinity to plus infinity. For example, start from 0, 1, 2, 3 up to infinity. Here we will start from -1, -2 up to minus infinity. So these are the integers. So it can be positive, it can be negative. So it is denoted by z. If it is written z plus, these are positive integers, and if it is written z minus, it is negative integers. So if z के साथ प्लस लगा है तो अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो क्या कह रहा है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन. और अगर z के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है. तो इंटीजर्स को अपन डिनोट करते हैं z से. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन एक बेसिकली वर्ड जो सबने सुना है. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मतलब जहां पर अपन बात करें, जहां पर अपन को एक नंबर पूरा नहीं मिलता, उसे अपन फ्रैक्शन बोल सकते हैं. वी कैन से दैट द अपोजिट ऑफ होल नंबर. वी कैन से दैट अपोजिट ऑफ होल नंबर. फॉर एग्जांपल, इफ वी कैन राइट in the form of parts. Parts how? For example, we are going to take one pie or one circle. In this we are dividing into 4 parts. 1, 2, 3, 4, and we can name it A, B, C and D. Now we are going to talk about fraction of this circle, and if you are taking this circle A, B, C, D, if you are talking about type C, so we can say that this is 3 by 4 because C is number 3 and total parts are 4, so we can say 3 by 4. टोटल आप देख रहे हैं सर्कल के 4 हिस्से, 4 पार्ट्स किए गए हैं. 4 पार्ट्स और 4 पार्ट्स में अगर अपन बात करें तो C जो है वो थर्ड पार्ट है आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. सो 3 by 4 इज अवर फ्रैक्शन. सो वी कैन से दैट कि किसी भी चीज को अगर अपन पार्टीशंस में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो टोटल नंबर जो होता है वो अपॉन में आता है, और ऊपर जो चीज को अपन जिस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज नोन एज फ्रैक्शन. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. Now we will discuss rational and irrational. Rational number होता क्या है? Rational number
सेपरेट डिफाइन करके बताऊं तो बस एक ही चीज होती है जिसको अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नॉर्मली अपन रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स which can be written in the form of p by q, in which a condition is there in which q should not be equals to 0, क्योंकि अगर q 0 हो गया अपॉन में q 0 हो गया that goes to infinity and that is not possible. Rational number that cannot be calculated up to infinity, so we can say that it can be written in the form of p by q. For example, 1 by 2 is a rational number because in which p is 1, q is 2. Okay, so this is a rational number. And 3 by 4 in which p is 3, q is 4. So these are the rational numbers. And now we will talk about irrational numbers. Irrational numbers, just opposite of rational numbers, जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. Opposite of rational numbers, जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, that is known as irrational numbers. So these are the numbers which we had discussed in this form. Hope you understood well, and we are thinking about your future, so that we are going to give you such online tutorials by MAHAVEER JAIN National School, JAORA. Thank you very much.